हेलो। हेलो। आप सुन सकते हैं जी? आप सुन सकते हैं? हेलो। हेलो। जी जी। बोलिए जी हाशिम, सर। आपने आपने हैंड रेस किया हुआ था, बोले। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया था। अभी आ गई है? जी जी अब आ रही है। चलें, ठीक हो गया, गुड। Continued from previous slides. The biographical approach is particularly important in German sociology, क्योंकि इसकी रूट्स वहाँ से हैं। और this approach is used in the social sciences as well as in pedagogy and other disciplines. Since it is being used in social sciences and pedagogy and the other disciplines, specifically pedagogy, that is the teacher education, and that falls under social sciences. So the biographical research is also component of covers these things. The research committee 38, it means multiple committees on research have been formed so far. The committee number 31, that was biography and society of the International Sociological Association, ISA, was created in 1984 and is dedicated to help develop a better understanding of the relations between individuals, lives, the social structures, and historical processes within which they take shape and which they contribute to shape, and the individual accounts of biographical experience, such as life stories or autobiographies. So, all of this work across the globe is supervised by the International Sociological Association that was created in 1984. In its uh, meetings and its objectives, one of the objective of this association is
to develop the better understanding of the relations between individual lives. So लाइफ स्टोरीज और बायोग्राफिकल रिसर्च को ये सपोर्ट करती है और उस पर काम करने में अप्रिशिएट भी करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। और हिस्टोरिकल रिसर्च हमें पता है, जिस तरह अभी मैंने बात की प्रीवियस स्लाइड्स में, कि जो बायोलॉजी biographical research है, that is also the overlapping like historical research. So in biographical research, historical research is carried out. So it plays a vital role towards the contribution to shape and in individual accounts of biographical experiences. So that was introduction to biographical research so far. If you do have any question, your comment, or any of the query about introduction of biographical research, you may raise your hand, you may ask. It's up to you now for next 5 minutes. Your questions and comments are welcomed. जी, हेलो हेलो, आप सुन सकते हैं? जी जी सर, जी, साजिद जावेद। सर एक्चुअली पूछना था, ये माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो लेवल एनालिसिस क्या होता है? माइक्रो लेवल जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो ना पायलटिंग, तो पायलटिंग में हम 5 to 10% ऑफ द टोटल सैंपल लेते हैं और उस पे जो हमारा रिसर्च एनालिसिस है उसको रन करके उसके रिजल्ट्स देखते हैं। क्योंकि ये एक माइन्यूट लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे है, सो दिस इज नोन एज द माइक्रो लेवल। मीजो लेवल विल बी some enhanced form of analysis। इसमें एक रीजनेबल सैंपल कंसिडर हम करते हैं, that might be up to 500 person या 500 objects of the sample on which we are going to conduct research, या from those people we have to consult for data collection. In biographical research, accordingly the number of people, number of documents, number of videos, clips, photographs, events, recordings will be considered. तो अगर तो ये इसका एक रीजनेबल नंबर हो तो वो मीजो में आ जाएगा। थर्ड जो है मैक्रो इज द मेगा। उसको आप विदन बाउंड्रीज नहीं लेके जाते अपने मुल्क की ही, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्रीब्यूशन करते हो, लोगों को पार्टिसिपेट करते हो। तो एक मेगा लेवल पे क्रॉस द बॉर्डर्स आपके पास लोग होते हैं, आपके पास ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी गिनी बायोग्राफिकल रिसर्च में, जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो दीज आर द 3 stages or the 3 levels: micro, meso and macro level of analysis। हमेशा से जो मेगा लेवल होता है या मैक्रो लेवल है, इसको मेटा कॉग्निशन या मेटा एनालिसिस भी कहते हैं। मेटा एनालिसिस बेसिकली हमें ट्रेंड बताता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेंड क्या है। बहुत सारे लोग, क्योंकि इसमें डिफरेंट ईयर, डिफरेंट नेशन, डिफरेंट एथनोग्राफी से और डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, तो ये एनालिसिस ज़्यादा सपोर्टिव और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आते हैं सामने। लेकिन जो माइक्रो लेवल है वो हमें सपोर्ट करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की, हमारे कंडक्शन के वेज और जो मेथोडोलॉजी है या उसका जो कोई आप कह लें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को सपोर्ट करता है, हमें चेक करने में हमें सपोर्ट करता है। जी, कोई और? थैंक यू। वेलकम।
there is no more question, should I move ahead? Okay. Now, biography as a form of access to larger groupings. Let's see what are the larger groups and how the large grouping is made. The biographical method as a research approach to understand larger groupings was used as a sociological material by Florian and William Isaac in 1920. After their work, the biographical approach was considered amongst the dominant research approach in empirical social research. Let me clear you here. What do we mean the empirical social research? Whenever the word empirical is used, it is denoted that the empirical data, it is based on the empiricism that is itself a philosophy and is the scientific process uh, used on the basis of all five senses. This is known as the empiricism. I have earlier discussed in the previous lectures as well. So the intent use use the data to collect the information about the social sciences in the social research. तो जब आप बायोग्राफिकल में जाते हैं तो उसमें फिर एक टाइप ऑफ सोर्स नहीं रहती या अप्रोच आपकी एक नहीं रहती, आप मल्टीपल अप्रोचेस जो हैं उनको कंसिडर कर रहे होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज said here that biographical approach was considered amongst the such approaches in empirical social research. The study the Polish peasant in Europe and America, and Thomas used an extensive collection of diaries, letters, memoirs, autobiographies, and other personal and archival documents as main source for sociological investigation. इसमें इंटरव्यूज भी आ सकते हैं, उनकी अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस और गुफ्तगू आ सकती है. ये तो रिसर्चर का काम है कि उसने रेलेवेंट बात जो है, जो उसको चाहिए, जो उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, उससे मुतल्लिक उसने कौन सा वहाँ से कीवर्ड लेना है. So these are the sources of collection of data to make executable solution of the collected data towards to answer the research objectives. Like sources are autobiographies, memories, memoirs, letters, and diaries. आर्काइवल डॉक्यूमेंट हमने शायद लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आर्काइवल रिसर्च क्या होती है. आर्काइव्स में जाके आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को कंसर्ट करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं. तो दैट इज आल्सो यूज्ड इन बायोग्राफिकल रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि आर्काइव्स में जाके आपको किसी की वो बुक्स मिलेंगी, उसके मतलब लिखा हुआ मवाद आपको मिल सकेगा. तो सोशल इन्वेस्टिगेशन का मेन सोर्स है ये डॉक्यूमेंट. डू रिमेंबर दिस नोशन दैट व्हाट आर द मेन सोर्सेज फॉर सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. तो जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज, memoirs, letters, and diaries, these are the main source for sociological investigation. The reception of this work was initially late due to linguistic barriers, but it was then absorbed and disseminated in the Social Sciences Research Council. ये साजिद आपके पीछे शायद बच्चे बातें कर रहे हैं, शोर आ रहा है.
So initially late due to the linguistic barriers, but it was then absorbed and disseminated in the Social Sciences Research Council SSRC. Or the latest developed form of this database has become of this research activity has become a database that is known as the SSRN, Social Sciences Research Network. तो काउंसिल से नेटवर्क बन गया है. नेटवर्क इज across the globe, whereas council was within the country. Let me share with you here the recent biographical research conducted in the previous years. Herein, since 1980s, biographical research gained momentum in the wake of growing interest for qualitative social research. Biographical research is now a recognized approach in sociology, especially in the German sociological tradition. तो अभी recent past है, आप कह सकते हैं कि 4 decades earlier ये एक इसने मोमेंटम पकड़ा और लोग इसकी तरफ माइल हुए और इसको ज़्यादातर लिया गया. और इसका जो होम टाउन है वो जर्मनी है और यूरोप में एट लार्ज ये यूज़ हो रही है. और हमें ये पता है कि ये इस ग्रो हुई या इसका इंटरेस्ट ग्रो हुआ था क्वालिटेटिव रिसर्च से, क्वालिटेटिव सोशल रिसर्च. So it is a recognized approach now in sociology. The sociology turned to the reconstruction of biographical cases and individual life courses as a form to gain insight on social process. So the social process, are deeply concerned with the society, and norms, culture, rituals, and many more about the society. The things are in process, and from those sources, the collected information is used to reconstruct a hallmark in these biographical cases. That is basically the life stories. Those are the life courses of individual, are the process of moreover, with the increasing pluralization of life words, modernization and differentiation in postmodern societies, the dissolution of traditional values and the conference of meaning, the biographical approach proved useful to study these social phenomena of the turn of the millennium. तो ये इस मिलेनियम के अंदर जो सोशल फिनोमेना की स्टडी सबसे ज़्यादा हुई है वो बायोग्राफिकल रिसर्च अप्रोच के तहत हुई है. इससे वर्ड्स, मीनिंग्स, टर्मिनोलॉजी, डिफरेंशिएशन एंड द सोसाइटीज, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज और डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज को वेल मैनर्ड सॉर्ट आउट किया गया है और इसको एनलिस्ट करके एक लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड किया गया है टू अंडरस्टैंड in depth all these process, and this process has been taken into consideration with the biographical research.
The actor became an interaction of different and sometimes divergent determinants, logics, expectations, normative models, and institutionalized mechanisms of control. Whereas the normal biography broke up and prompted the individual to manage his life course on his own and to find solutions amongst different and contradictory influencing factors and figuration. So, different contradiction and different influences are influencing factors are there in the systems of understanding to manage the life forces. So, very beautifully, this in a beautiful way, this research approach have served this purpose to the normal biography. In this situation, the self-discovered biographical identity with its uh, endangered transitions, breaks, and status changes becomes a conflict between institutional control and individual strategy. That is the strategy to conduct research. The reconstructivist or the reconstructivism, this approach in biographical research, which is connected to the phenomenological and Gestalt approach. Basically, Gestalt theory is the psychological theory presented by the Gestalt, was methodologically developed by the German sociologist Gabriel Rosenthal. Phenomenological approach from the different phenomena, it has been developed in different times to cover the different components of this Gestalt approach. Rosenthal used principles of the method of objective hermeneutics and reconstructive analysis of the Ulrich and the Gestalt structure considerations approved by Aron to develop a method of the reconstruction of biographical cases. I am ending this session here. Methods and limitations of biographical research will be shared with you in the next session. So far, we have covered two areas, two major components of biographical research. First one was the introduction of biographical research, and in the second session, I have shared with you that the research conducted in the area of biographical methodology in recent past, starting from 1980s. So during these 4 decades, all of the research, the crux of the research has been shared with you. Okay, we'll see you in the next session. Allah Hafiz.